लाइव पण चालू है ना? यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हमने स्टार्ट कर दिया था हमारा डिस्कशन रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमने सिर्फ ये समझा था कि आखिर क्या क्या कंसेप्ट्स अप्लाई होने वाली हैं, किस तरह से उन कंसेप्ट्स को डील करना है, उसके बारे में आज से हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज चैप्टर नंबर 6 में यूनिट नंबर 1 में जो दिए हुए हैं, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम और कंसेप्ट्स ऑफ द नेशनल इनकम, जिसमें से सबसे पहला पार्ट इज जीडीपी। जीडीपी, what we commonly call as the gross domestic product. Gross domestic product. Now in this gross domestic product, if I'll just put forth the notes in front of you, in this gross domestic product, the basic meaning of that is, it is the gross domestic product first of all is calculated at the market price, which means what? That it is the total value of the outputs which is created during the year. During a particular fiscal year is what we call it as. जहां जब हम लोग गवर्नमेंट के लिए बात करते हैं तो we call it as fiscal year. So during a fiscal year, whatever is the produce, the aggregate of that is what we call as the gross domestic product. Now gross domestic product at market price, if we have to calculate, the basic equation for that is GDP can be calculated at market price or it can be calculated as the factor cost. When I am calling it as market price, value of all goods and services produced during the year within the domestic territory, which means what? That what it is going to include is all the goods and services produced or supplied during the year, and that too only within a particular year, within the particular territory, that is the domestic territory. That is what we call as the gross domestic product. Now what happens is, इसमें से कुछ हिस्सा तो आपसे गवर्नमेंट ले रही है in the form of taxes, and therefore such indirect taxes or subsidies have to be excluded for the purpose of arriving at the gross domestic product at factor cost. So what we consider is, if we want to calculate the gross domestic product at factor cost, that will be what? Gross domestic product at market price, add subsidies less indirect taxes. This we can also call as, this part can also be called as commonly in the form of NIT or net indirect taxes. Net indirect taxes is what we call as NIT. तो इसका मतलब ये हुआ that if I've been given the gross domestic product at market price, in that case I may arrive at the gross domestic product at factor cost. How? By subtracting therefrom the indirect taxes and adding thereto the subsidies. यहां हम लोग जो जिन सब्सिडीज की बात कर रहे हैं दोस्तों, that is different from the transfer payments. ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या? जो गवर्नमेंट ने विदाउट प्रोडक्टिव एक्टिविटी किसी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर किए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफर पेमेंट. ट्रांसफर पेमेंट का रेफरेंस आता है व्हाइल कैलकुलेटिंग द पर्सनल इनकम.
कई सारे बच्चे इस चीज को कंफ्यूज कर जाते हैं और एग्जाम में जब वो प्रॉब्लम सामने आता है या एमसीक्यू सामने आता है, एट दैट टाइम दे कंसीडर द ट्रांसफर पेमेंट्स आल्सो एज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. इट इज नॉट. The transfer payments is the factor considered only at the time of calculating the personal income and not at the time of calculating the gross domestic product. While calculating the gross domestic product at factor cost, we consider only the indirect taxes and the subsidies. Right? अब अगर suppose हम लोग GDP की बात करें, the GDP can be calculated as nominal GDP or it can also be calculated as the real GDP. अगर डेफिनेशन की बात करें तो करंट प्राइसेस पे जब हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं, एट करंट प्राइसेस, इन दैट केस इट बिकम्स द नॉमिनल जीडीपी. मतलब जिस फिस्कल ईयर के लिए हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसी फिस्कल ईयर के प्राइसेस कंसीडर करके जब हम जीडीपी का वैल्यूएशन करते हैं तो इन दैट केस इट बिकम्स द जीडीपी एट नॉमिनल रेट्स और व्हाट वी कॉल एज द नॉमिनल जीडीपी. वेयर एज अगर जीडीपी को हमने कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट किया, एट कांस्टेंट प्राइसेस, then in that case it becomes the real GDP. Now what is this constant prices? Suppose 2010 को बेस ईयर बनाया गया और इस साल में किसी प्रोडक्ट की कीमत थी मान लो 100 रुपए, राइट? अगले साल में उस प्रोडक्ट की कीमत हो गई मान लो 105 रुपए. नेक्स्ट ईयर में उस प्रोडक्ट की कीमत 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम पुटिंग ओनली 6 इयर्स. 2012 में उसकी कीमत हो गई मान लो 112 रुपए, यहां उसकी कीमत हो गई 120 रुपए, यहां उसकी कीमत हो गई मान लो 125 रुपए, यहां उसकी कीमत हो गई 130 रुपए, राइट? अब अगर कोई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर प्रोड्यूस किया गया, मान लो इसके 1000 यूनिट प्रोड्यूस किए गए, तो जीडीपी में अगर मुझे कंसिडरेशन करना है एट नॉमिनल जीडीपी, तो व्हाट विल आई डू? नॉमिनल जीडीपी में दिस विल बी इंक्लूडेड एट 1000 यूनिट्स एट 130. मतलब दिस बिकम द करंट प्राइसेस और नॉट, राइट? सो दैट कम्स टू 1,30,000, correct? But if I want to consider at the constant prices, year constant, मतलब मुझे बेस ईयर के प्राइस को कंसिडर करते हुए अगर इसकी वैल्यूएशन करनी है, then in that case it will become the real GDP. तो अगर 2010 के कंपैरिजन में आज हमारे जीडीपी की सिचुएशन क्या है ये मुझे कंसिडर करना है, तो व्हाट आई विल कंसिडर? 1000 यूनिट्स इनटू 100 rupees, that becomes 1 lakh rupees. Is it one right? मतलब हमारी ग्रोथ सिर्फ वैल्यू वाइज पैसे से नहीं हो रही है, हमारी ग्रोथ क्वांटिटी वाइज या प्रोडक्शन वाइज भी हो रही है. नहीं, हमने टोटल ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द ईयर बेस ईयर 2010 टू करंट ईयर, अगर प्राइस वाइज बात करें, प्राइस इंक्रीज और वैल्यू इंक्रीज, तो हमने कितनी इंक्रीज की? 30,000. दिस इज कॉल्ड एज जीडीपी ग्रोथ फ्रॉम वॉल्यूम वैल्यू परस्पेक्टिव. पर मान लो बेस ईयर में इसके हमने 600 यूनिट बनाए थे, तो बेस ईयर में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना था इसका? 60,000. अब कंट्रीब्यूशन कितना है? 10,000 कंसिडरिंग द बेस प्राइसेस. यस और नो? तो इसका मतलब हमारी ग्रोथ हुई बाय 40,000. And that 40,000 की growth is because of what? Because of the volume growth. रियल जीडीपी ग्रोथ का मतलब होता है सिर्फ इन्फ्लेशनरी ग्रोथ को ना कंसीडर करते हुए हमने अगर एक्चुअल प्रोडक्शन में, एक्चुअल प्रोड्यूस सर्विसेज में कितना प्रोग्रेस किया है. इफ वी वांट टू कैलकुलेट दैट, इट कम्स अंडर द रियल जीडीपी एंड नॉट अंडर द नॉमिनल जीडीपी.
हम जब भी जीडीपी का कंपैरिजन करते हैं तो वी कंपेयर इट ऑन द बेसिस ऑफ रियल टर्म्स एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल टर्म्स. तो आखिर नॉमिनल से, so growth in GDP comes because of growth in GDP comes due to two factors. One is inflation. What do you mean by inflation? Price rise from one year to another. That is what we call as inflation. And second reason is the volume growth or the real growth. Right? And therefore, when we are calculating the real growth comparisons, when we are doing the comparison of GDP from one year to another, we do not compare the nominal GDP of one year with the nominal GDP of another year. We compare what? The real GDP of one year with the real GDP of another year. So in this case, I'll be required to arrive at the real GDP or not. So real GDP in that case will be equal to nominal GDP divide by GDP deflator or CII, that is consumer inflation index, right? So that is what is considered. Now here if you would be observing, यहां 100 से 105 गए हम लोग क्योंकि 5% का इन्फ्लेशन हुआ, फिर हम 105 से 112 पे गए, फिर कुछ परसेंटेज का इन्फ्लेशन हुआ, फिर 112 से 120 पे गए, फिर हम लोग 120 से 125 पे ग्रो किए, फिर 125 से 130 पे ग्रो किए, राइट? सो फ्रॉम द ईयर 2010 बेस ईयर से लेके आज तक हमारी ग्रोथ कितनी हुई? इन्फ्लेशनरी ग्रोथ कितनी हुई? 130. सो वी हैव ग्रोन 30% इन द मार्केट बिकॉज ऑफ नॉट द वॉल्यूम ग्रोथ, बिकॉज ऑफ व्हाट? प्राइस ग्रोथ. हमको अगर कंपैरिजन करें तो हमें क्या होना, हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए? रियल ग्रोथ कितनी है, एक्चुअल ग्रोथ कितनी है. और एक्चुअल ग्रोथ कब आएगी? जब आपका एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल सर्विसेज बढ़ेगी. एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू कैलकुलेट द रियल ग्रोथ, एंड फॉर दैट पर्पस रियल जीडीपी इज इक्वल टू व्हाट? नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय जीडीपी डिफ्लेटर. ये जो इन्फ्लेशनरी बेस, इन्फ्लेशन ऑन बेस है, 100 से 105, 105 से 112, 112 से 120, this is what we call as the deflator. So that GDP deflator will reduce down the nominal GDP to the real GDP, and that real GDP of one year will be compared with another for the purpose of understanding the real growth of the nation. हमें जब भी गवर्नमेंट द्वारा कोई इंफॉर्मेशन मिलती है that our GDP is growing at the rate of 5%, our GDP is growing at the rate of 3%, जब ये इंफॉर्मेशन मिलती है तो they do not indicate the nominal GDP growth, they indicate what? The real GDP growth. हमारे सामने जो डेटा आता है वो किसकी ग्रोथ का आता है? रियल जीडीपी का, एंड नॉट द नॉमिनल जीडीपी. इज द पॉइंट राइट? नाउ based on the GDP deflator we can also calculate the inflation. So percentage of inflation is equal to change in deflator, change in GDP deflator divide by base year deflator multiplied by 100. Now base year or previous year, instead of base year we'll write previous year deflator. मतलब क्या? हमने कहा deflator for the year 2015 in year ending 2015 is 130 and deflator for the year ending 2014 is 125. तो चेंज कितना आया? 5 पॉइंट्स का. ऑन व्हाट? ऑन 125 का बेस ईयर डिफ्लेटर, प्रीवियस ईयर डिफ्लेटर, मल्टीप्लाइड बाय 100. तो हमारा इन्फ्लेशन कितना हुआ? इट इज नॉट 5%, हमारा 5 पॉइंट से इन्फ्लेशन हुआ, मतलब 5% का इन्फ्लेशन नहीं हुआ है. इफ आई वांट टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन रेट, हाउ विल आई कैलकुलेट दैट? 5, that is change in inflation rate, change in deflator divide by previous year's deflator. तो change in deflator कितना?
पिछले साल का 125, इस साल का 130, तो चेंज कितना आया 5, और प्रीवियस ईयर का डिफ्लेटर कितना है 125, उसके ऊपर ग्रोथ हुई ना, दैट्स व्हाई प्रीवियस ईयर डिफ्लेटर, सो दैट कम्स टू व्हाट 4 पर एग्जैक्ट 4% आया. Okay. So 4% is the inflation rate and not 5%. Students make another mistake in the examination. Inflation rate पूछा है, previous year deflator was 120, current year deflator is 126. बंदा immediately reply करता है 6% का growth. Whereas it is not 6% का growth, it is effectively 5% का growth. क्यों? 6 divided by 120 into 100 is what you will be doing or not? Right? सिमिलरली अगर मुझे बेस ईयर से डिफ्लेटर का इन्फ्लेशन मतलब 2010 से आज तक इन्फ्लेशन कितना हुआ है ये अगर कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन माय जीडीपी, इफ आई वांट टू कैलकुलेट दैट, हाउ विल आई डू दैट? फ्रॉम 2010 टू 15, हाउ विल आई डू दैट? 2010 का डिफ्लेटर कितना था 100, 2015 का डिफ्लेटर कितना है 130. So change in deflator is what? 30 divide by 100 previous year multiplied by 100 and therefore the rate of percentage come to 30%. मतलब पिछले 6 साल में हमारे देश में inflationary situation की वजह से मार्केट कितना बढ़ा 30%. This is called as price growth or inflationary growth or value growth. But GDP का comparison किस बेसिस पे होना चाहिए? Volume growth पे and not on the value growth. That's why what you will do whenever they will be asking you the growth in GDP, first convert the nominal GDP to the real GDP, then real GDP of current year with the real GDP of previous year. That is what will be compared for the purpose of arriving at the growth in our GDP. So suppose nominal for 2000, लेट्स से 2025 का नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है हमको, लेट्स से 560 crore, right? And for 2024 it is given as 510 crore, whereas deflator given to us, deflator is 145 for this and 151.5 for this, and we have been asked to calculate what? The growth in GDP, growth in GDP. यहां पे हम लोग दो तरह की ग्रोथ कैलकुलेट कर सकते हैं. कौन सी दो? Nominal growth. How will you calculate nominal growth? Current year GDP minus previous year GDP, nominal one, divide by previous year GDP. Current year GDP minus previous year GDP divide by the previous year GDP. This will give us the nominal growth in GDP. What is that? 560 minus 510. Sorry. हाँ बराबर है. Divide by 510 into 100. Tell me. 9.8%. So our GDP has grown by 9.8%. On what? On nominal basis. This is nominal growth. Whereas real growth, for real growth you will be requiring real GDP or not? Change in real GDP. Real GDP upon previous year real GDP. Now you will not consider the nominal GDP, but you will be considering real GDP multiplied by 100. Are you able to understand this? Now, first we will be required to calculate the real GDP or not. Real GDP for what? First for the year 2024. How much is that? 510.
व्हाट इज द डिफ्लेटर वैल्यू? अच्छा मैंने डिफ्लेटर्स उल्टे लिख दिए. व्हाट इज द डिफ्लेटर वैल्यू? 145 into 100. So real GDP for 2024 is how much? Both years GDP has to be converted to the constant prices first. Is it right? कितना आया? परसेंटेज नहीं आएगा बेटा, वैल्यू आएगी अब. 510 डिवाइड बाय 145 into 100, 351 exact 0.72. Is it right? This is the real GDP of 2024. और 2025 का रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करोगे आप? 560 डिवाइड बाय 151.5 into 100. Are you able to understand this? And that comes to 369.63. अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो रियल टर्म्स में कितना ग्रोथ हुआ रे? रियल टर्म्स में ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करोगे? सो रियल ग्रोथ इज इक्वल टू 369.63 minus 351.72 divide by 351.72 into 100. परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करने के लिए कितना आया? 5.08%. जब हमने यहां देखा तो हम एकदम मोटिवेट हो गए, यार हमारा जीडीपी 9.8% से बढ़ा है. बट जब यहां देखा तो इफेक्टिवली क्या पता चला? द रियल ग्रोथ इज ओनली 5%, हाफ ऑफ द नॉमिनल जीडीपी. तो बचा हुआ 5% क्यों ग्रो हुआ? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन. तो एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो आपको दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ और रियल जीडीपी ग्रोथ. फॉर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ you need the GDP at current prices, and for the real GDP growth you need the GDP at constant prices. GDP at market price but constant prices. Is it one right? Did you understand this? Online जो लोग भी बैठे हैं, I hope you people are understanding what we are talking about here. लेट मी कम टू द नेक्स्ट पार्ट. सो फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया, दैट इज जीडीपी. जीडीपी में कौन से पहले दो तरीके, कौन से? मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. जीडीपी कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एट नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी मींस जीडीपी एट करंट प्राइसेस फॉर द करंट ईयर, whereas रियल जीडीपी मतलब क्या? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, दैट मींस कंसीडरिंग द प्राइसेस ऑफ बेस ईयर. दैट इज व्हाट वी कैलकुलेटेड एज नॉमिनल जीडीपी divide by deflator multiplied by 100 will give us what? The real GDP. और GDP growth जब पूछी जाएगी तो we should normally be calculating it with reference to real GDP and not with reference to the nominal GDP unless and until we do not have the data. अगर डेटा ही नहीं दिया डिफ्लेटर का तो GDP growth will be calculated with reference to nominal GDP itself. Is it right? Did you understand? Why the real GDP growth and nominal GDP growth has the difference? Because of the inflationary situation. Right on the line. In inflationary situation, the GDP, nominal GDP growth or nominal GDP will be more than real GDP. Nominal GDP will be more than real GDP, whereas under deflationary situation, nominal GDP
will be less than real GDP. Nominal GDP will be less than real GDP. Did you get the first part right? The next one, now if let's say this is India and this is outside India. All right. There are some individuals in India or the group of individuals in India or companies. Individuals, group or companies who are in India but they are working outside India. So when they are working outside India, they are earning in here. Yes or no? And their earnings should be the part and parcel of India only or not? Similarly, there are the individuals, there are the group of individuals, or there are the companies who belong to outside India, but they all are working in India. That means they are also earning in India or not. But this earning actually belong to what? Outside India. The difference between their earning, the people who are working outside India but belong to India, these earnings and these earnings, the difference between these two is called as NFIA. That is net factor income from abroad. That is what we call as NFIA. So if I am having the gross domestic income and if I want to arrive at the gross national income, I am having what? Gross domestic income, but I want to arrive at gross national income or gross national product. What will I do for this? From domestic, I need to move to national. The difference between these two, will be what? NFIA. So if I am having GDP at market price, but I want to arrive at what? GNP at market price, GDP at market price minus, plus or minus the NFIA, that is net factor incomes from abroad, will be what? The gross national product at market prices. Did you people understand this? So whenever we are calculating the gross national product, what we need to consider out is बाहर के लोग जो हमारे देश में पैसा कमा रहे हैं, and what we need to include is हमारे लोग जो बाहर से पैसा कमा के ला रहे हैं. That is what is the difference between the GDP and GNP. Is it right? Now even the GNP can also be calculated at factor cost. Now what do I mean by factors? Let's try to observe that. Factors of production include capital. On this capital, in some cases we earn interest, in some cases we earn rent, and if there is any employee, that is labor, the labor normally gets salary or wages, and there are some people who are self-employed. Now self-employed, मैंने अगर मेरे ही बिजनेस में काम कर, मेरी ही प्रॉपर्टी में काम करना चालू किया, I'm not going to pay the rent to myself.
अगर मैंने मेरा ही खुद का पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो आई एम नॉट गोइंग टू पे द इंटरेस्ट टू माई सेल्फ, बट माई प्रॉफिट व्हाट आई एम अर्निंग will include all these parts or not. Therefore, their income is called as mixed income. Their income is called as what? The mixed income. Whereas capital पे अगर मैं invest कर रहा हूं तो I may earn profits also or not. Suppose मैंने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, on that investment I may get the return by the earning is by company, but it is my share or not. So that's why that profit will also form the part and parcel of factor cost. Now, along with that, these capital, if I am using the capital goods, on that I may be required to charge the depreciation or not. So these all factors what we just talked about, the values thereof individually, if I am aggregating together, that becomes my GDP at what? Factor cost. Is this point right? क्योंकि यहां पे हमने ना इनडायरेक्ट टैक्सेस कंसिडर किए, ना ही सब्सिडीज कंसिडर की. दैट्स व्हाई दिस विल बिकम व्हाट? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. Am I going good? Am I right with everyone? Just 1 minute. हाँ, मैंने एनडीपी लिखा था ना? नहीं. Yep. So yes. So when I am calculating the GDP at factor cost, इसका दूसरा तरीका कैलकुलेट करने का क्या हो गया? Is equal to profits plus interest plus rent plus depreciation. ये सारे किसके अगेंस्ट हैं? Against the factor called as capital. To this we'll also add salaries or wages, and to this we'll also add what? Mixed income. This all put together will also be called as the GDP at factor cost. Why we have not considered the indirect taxes in this? Because indirect taxes are included when we are calculating the market price. But what we are currently calculating is factor cost. तो जीडीपी के मैंने कौन कौन से तरीके से कैलकुलेशंस होते हैं, उसके साथ साथ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी किस तरह से कैलकुलेट होता है, ये हमने डिस्कस किया. नाउ इफ आई वांट टू अराइव, अब जीएनपी हमने किस बेसिस पे कैलकुलेट किया? मार्केट प्राइस पे, बराबर. नाउ इफ इवन जीएनपी आई वांट टू कैलकुलेट एट फैक्टर कॉस्ट, हाउ विल आई डू दैट? GNP at factor cost will be equal to what? GDP at factor cost plus oblique minus what? Net factor income from abroad. Can you understand this? फैक्टर कॉस्ट मतलब ये सारे फैक्टर्स आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में, अगर ये सारे आइटम्स आपको दिए हुए हैं, इन सबका एग्रीगेट एंड एडजस्ट इट विथ व्हाट? द नेट factor income from abroad to arrive at what? The gross national product at factor cost. Did you understand this? Is the flow going good for everyone? Next one. The next part, that is the net domestic product. Again, this can also be calculated at market price, this can also be calculated at factor cost. Now, what is the difference between gross and net? Gross and net. The difference between these two is
डेप्रीसिएशन। जैसे ग्रॉस सॉरी डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस क्या, एनएफआई। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस क्या, एनआईटी। उसी तरह से ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या, डेप्रीसिएशन। एम आई गोइंग गुड? सो इन दिस केस, if I want to calculate the net domestic product, I must be having first the gross domestic product or not. So how will I calculate that? NDP at market price is equal to gross domestic product at market price minus depreciation. मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस अपने आप आ जाएंगे या नहीं? So you can also calculate it as what? Rent, interest, profit. डेप्रीसिएशन नहीं जोड़ेंगे हम लोग यहां पे. रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस व्हाट? सैलरीज एंड वेजेस प्लस व्हाट? मिक्स्ड इनकम. पर इन सब चीजों से क्या मिला हमको? सिर्फ फैक्टर कॉस्ट. पर हमें किस पे कैलकुलेट करना है? मार्केट प्राइस. सो एड टू दिस indirect taxes and subtract therefrom subsidies. Is it right? That means simple terms, अगर मैं इसको सिंपल करूं थोड़ा सा, so add to this what? NIT. The net indirect taxes have to be added. नाउ आप दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो. पहला तरीका क्या बताया मैंने? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सबट्रैक्ट देयर फ्रॉम द डेप्रीसिएशन. ये हो गया फॉरवर्ड कैलकुलेशन. रिवर्स कैलकुलेशन अगर करना हो, एक एक आइटम को ऐड करना हो, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया हुआ है, फिर क्या करोगे आप? फिर सारे फैक्टर्स के रेम्यूनरेशंस को आप एड अप करते जाओगे या नहीं? दैट्स व्हाई इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट विल बी एडेड बट नॉट द डेप्रीसिएशन. To that you'll add what? Salaries and wages. To that you'll add what? Mixed income. To that you'll add what? NIT. क्योंकि मार्केट प्राइस है. और ये अगर फैक्टर कॉस्ट पूछा होता तो I would have considered the same thing, excluding NIT. So, if I've been given, if I want to calculate NDP at factor cost, how will I do that? Either GDP at market price माइनस NIT माइनस डेप्रीसिएशन. ये एक तरीका हो गया. क्योंकि जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से अगर आप NIT माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से आप डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? सिमिलरली, नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट इट फर्दर in the forward way, how will I do that? Rent, interest, profit plus salaries plus mixed income. That's it. I will not include what? The net indirect taxes. आप दोनों में से किसी एक तरीके से आपका एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो. एम आई गोइंग गुड? ऑनलाइन एम आई गोइंग गुड फॉर यू? देखिए कैसा है, आपको रिस्पॉन्ड करते रहना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके रिस्पॉन्सेस ही मुझे बताएंगे कि मुझे आगे कितना डिटेल में जाना है और ये कंसेप्ट्स आपके दिमाग में, आपके जहन में सही बैठ रही है नहीं. एक तरफ बिहार के इलेक्शन में सब उल्टा पलटा हो गया है. वो लालू यादव के बेटे कंटिन्यूस बोल रहे थे कि हम ही जीतेंगे, और अचानक से पूरा का पूरा पलड़ा बीजेपी का भारी हो गया है. बीजेपी इज 81 सीट्स और जो उनके साथ में नीतीश कुमार की पार्टी है उसकी 80 सीट्स और बाकी सबके मिला के बची हुई सीट्स.
सो इसलिए दे हैव ऑलरेडी गॉन टू द मेजॉरिटी नाउ द सिचुएशन इज। तो आप लोगों को भी इसी तरह से आईसीआई के सामने अपना पलड़ा भारी करना है। नहीं तुम तो ऊपर बैठे हो, सॉरी, मैं बाद में बात करता हूँ फिर। बहुत ज्यादा मार्क्स आ गए। यस, मिलते हैं। ये जो ब्लैक जैकेट वाली लड़की आई थी ना अभी, ये लगभग आधे क्लासेस में सोई थी, लगभग लगभग। सिर्फ ऐसा है, घर जाती थी तो पढ़ाई करती थी सिर्फ, और कुछ नहीं करती थी। दैट्स व्हाई द डिफरेंस कम्स। वेल, आप नहीं देख पाए कि दिखे आपको? नहीं नहीं, कोई नहीं, अगली बार ऐसे कोई मिलने आएंगे तो आपसे भी जरूर मिल पाऊंगा मैं। जरूरी है, मतलब कैसा है ना, कल मैंने बताया ना आपको कि धीरे धीरे जलते रहनी चाहिए, राइट? क्योंकि वो मराठी में कहते हैं हम लोग यहाँ पे कि ते शेपटीला आग लागली असेल तर रॉकेट नक्कीच उड़तो। वो रॉकेट, आपने कभी फायर क्रैकर जलाए होंगे तो रॉकेट नाम का एक फायर क्रैकर आता है, उसमें उसकी वो पूंछ होती है, उसको आग लगाओ तो वो रॉकेट एकदम धूम करके ऊपर जाता है। तो बस आप अपने शेफ्टी को आग लगाए रहने दो, मतलब आपको बहुत ऊपर तक के उड़ना है, ये ध्यान में रखो। खैर, आई कम बैक। ऐसे ज्यादा इधर उधर की बातें करना भी गलत बात है। ऑलराइट, तो the next part that we need to talk about now is the NNP। पहले हमने क्या डिस्कस किया? जीडीपी। जीडीपी कौन सा डिस्कस किया? मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। फिर हमने डिस्कस किया जीएनपी, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। फिर हमने डिस्कस किया एनडीपी, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। और उसी तरह से अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? NNP, that is the net national product. I hope the speed is going good for everyone, और आप कंसेप्ट्स को भी समझ पा रहे हो, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि हम लोग सिर्फ रन थ्रू कर रहे हैं, यू आर अंडरस्टैंडिंग। और आप जब पन्ने पलटाओगे ना आपके नोट्स के या मॉड्यूल के, उस समय पे आप रियलाइज करोगे यार ये इतनी छोटी छोटी कंसेप्ट्स है। सिर्फ ऐसा है कि हम लोग उसके वो जो पैराग्राफ्स पढ़ना चालू करते हैं तो हमको लगता है यार बहुत कुछ है इसमें, whereas it's not the case. Net national product or NNP. Now when we are talking about NNP, again NNP can also be calculated at market price as well as factor cost. Domestic और national में क्या फर्क है रे? डोमेस्टिक और नेशनल, NFIA. So I have got first formula for this as what? GNP at market price plus oblique minus NFIA. Yes or no? मान लो मुझे, सॉरी, GDP नहीं, मैं लिखा बराबर GNP, प्लस माइनस नहीं आएगा, आई एम सॉरी। ग्रॉस और नेट के पीछे डिफरेंस क्या है? डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का डिफरेंस NFI, और ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस डेप्रीसिएशन। सो फ्रॉम दिस आई विल सबट्रैक्ट डेप्रीसिएशन। एम आई गोइंग गुड? है ना? नाउ सपोज एग्जाम में क्वेश्चन में हमको दिया गया है ग्रॉस डोमेस्टिक, हमको ग्रॉस नेशनल नहीं दिया गया, क्या दिया गया है? ग्रॉस डोमेस्टिक, एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द नेट नेशनल. So first we'll be arriving at GNP, and then we'll be able to arrive at NNP or not. So how will we do that? Gross national product, sorry, gross domestic product at market price plus oblique minus what? NFI will be giving us what? GNP at market price. So can I revise my equation of NNP at market price is equal to GDP at market price plus oblique minus NFI
माइनस डेप्रीसिएशन। यस और नो? मान लो मेरे पास एनडीपी की वैल्यू है and I want to arrive at the NNP. How will I do that? I am having the value of what? NDP, but I want to arrive at NNP. Another formula, GDP at market price, sorry, NDP at market price less, sorry, add minus NFI gives us what? I'm sorry, NNP at market price. Yes or no? अगर एनडीपी मिला हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली एनएनपी पे आ सकते हैं। तो इसका रिवाइज फॉर्मूला अगर हम लोग करें तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस कैन बी कैलकुलेटेड इज व्हाट? जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीसिएशन। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या? नहीं, एनआईटी। ग्रॉस और नेट डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक और नेशनल एनएफआई, और मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस क्या? एनआईटी। तो वापस से अब पहला फॉर्मूला हमने क्या डेवलप किया? जीएनपी विद डेप्रीसिएशन। अगर हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दिया हुआ है फिर भी हम लोग एनएनपी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन, दैट विल सिंपली गिव अस व्हाट? एनएनपी। दूसरा, अब जीडीपी में से अगर प्लस माइनस करते हैं हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो हमको जीएनपी मिल जाएगा, राइट और नॉट? इसलिए हमने फॉर्मूला क्या डेवलप किया? जीएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रीसिएशन। इस तरह से भी हम लोग डायरेक्टली एनएनपी कैलकुलेट कर सकते हैं। और तीसरा, अगर हमें एनडीपी दिया हुआ है और उसके बेसिस पे नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो हाउ विल वी डू दैट? NNP is equal to NDP plus minus net factor income from abroad. Is it point right? और NDP कैसे अराइव करेंगे हम लोग? GDP at market price minus depreciation. So my revised formula can be what? Same as this. कौन सा वाला? ये वाला। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मेरा रिवाइज फॉर्मूला सेम तैयार होगा या नहीं? So whether you are given GDP, whether you are given GNP, whether you are given NDP, with either of the three factors you can calculate what? NNP. Is it point right? सारे रिलेशन समझ में आ रहे हैं क्या? इसका हम लोग पूरा का पूरा एक सिंगल फ्लो चार्ट बनाएंगे, पर हाल फिलहाल के लिए पहले फैक्टर समझ रहे हैं हम लोग, राइट? नेक्स्ट वन, दैट इज द लास्ट वन, NNP at factor cost, what we commonly call as the national income or NI. National income or NI. How do I calculate this? NDP at factor cost plus minus NFI or GDP at factor cost minus depreciation plus oblique minus NFI, right? क्योंकि फैक्टर कॉस्ट लिया हुआ है। बट इफ आई एम गिवन जीडीपी एट मार्केट प्राइस, व्हाट विल आई डू? GDP at market price minus NIT will give me GDP at factor cost minus depreciation plus minus net factor income from abroad. Is it right? Or I can say NDP at market price. NDP at market price minus NIT plus minus NFI. Are you able to understand this?
or I can also say salary plus rent, interest, profit plus mixed income plus minus NFIA will give me what? The net national income at factor cost. Are these whole sequences right for everyone? Let's start with GDP now. The very first part. सबसे ऊपर क्या? Gross domestic product, right? At market price. इसमें से अगर मैं NIT निकाल दूं, क्या बचेगा? GDP at factor cost. इसमें से अगर मैं डेप्रीसिएशन निकाल दूं तो क्या बचेगा? NDP at factor cost. बराबर? इसमें से अगर मैं इसमें मैं कर दूं एडजस्ट, क्या? NFI, क्या मिलेगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल इनकम. ये पहला तरीका हो गया. दूसरा, इसमें से अगर मैं डेप्रीसिएशन माइनस कर दूं, क्या बचेगा? जीडीपी एट, सॉरी जीडीपी नहीं, एनडीपी एट मार्केट प्राइस. इसमें से अगर मैं अब एनआईटी निकाल दूं, क्या बचेगा? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. और इसमें मैं वापस से एडजस्ट कर दूं, क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. क्या मिलेगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम. सो नेशनल इनकम कंप्यूट करने के दोनों फ्लो है आपके पास. कब क्या एडजस्ट करना है, दैट विल ऑल डिपेंड ऑन व्हाट? On the information provided in the question. Based on the question, you will be deciding whether you want to adjust the depreciation first, whether you want to adjust the NIT first, or you want to adjust the NFIA first. लास्ट बार एक बार वापस रिवाइज करते हैं. पहले लिख लीजिए आप चार्ट. Shall I? Gross or net? What is the difference? Depreciation. Domestic or national? What is the difference? NFIA. Net factor income from abroad. तीसरा, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस क्या? NIT, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. यहां तक के कंसेप्ट सही है सबके लिए? डिफ्लेटर वाला कंसेप्ट ओके. जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. टोटल 9 अलग अलग कंसेप्ट हमने डिस्कस की. इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया नॉमिनल और रियल जीडीपी. मैं दुकान बंद नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल चिंता मत करिए. दूसरा वाला फैक्टर क्या डिस्कस किया हमने? नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. इज इट पॉइंट राइट? यहां तक ठीक है? नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट्स, दैट इज
पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम क्या क्या है ये? व्हाट डू आई मीन बाय पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर includes government department organizations। मतलब क्या? पोस्ट ऑफिस, रेलवेज, etc. These all are what? Public sector departmental organization। यानी जिसके लिए कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट अपने ही डिपार्टमेंट के, अपने ही मिनिस्ट्री के अंतर्गत इन ऑर्गेनाइजेशंस को चलाती है। तो उसकी इनकम जो भी गवर्नमेंट को मिल रही है, दैट ऑल विल बी कंसीडर्ड एज पब्लिक सेक्टर इनकम, द इनकम ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। Then second part that comes is the PSEs or PSUs। इसे PSEs के नाम से भी जाना जाता है और PSUs के नाम से भी जाना जाता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि which will include the statutory corporations or government companies। What is a statutory corporation? ऐसी organization which is incorporated by virtue of a separate law, that is called as a statutory corporation। Like if you take the example UGC, University Grant Commission, that is incorporated under a separate statutory body। Or for that matter, if you take the example of LIC of India, LIC of India is incorporated under a separate law। Or if you take the example of ICAI, it's been incorporated as ICAI Act। Or if you take the example of RBI, RBI is governed under the RBI Act। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है, इन्हें हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की जो कुछ भी इनकम होती है, वो सारी की सारी किसकी इनकम होती है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट, राइट। उसी तरह से द गवर्नमेंट कंपनीज, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज इज व्हाट? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ये एक सेपरेट लॉ के अंतर्गत बनाई जाती हैं, बट गवर्नमेंट कंपनीज ये कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के अंतर्गत बनाई जाती हैं। हालांकि more than 51% shareholding in such companies is that of the government, which can be of the central government, which can be of the state government, which can be the combination of central and state government, or those can also be owned by the government companies, or combination of these all। That is what you call as the government companies। तो इन सब की जो भी इनकम आएगी, the income earned by these all will be considered as the public sector income। Is it point right? तो अब अगर हमें प्राइवेट सेक्टर इनकम कैलकुलेट करनी होगी, प्राइवेट सेक्टर will include what? Individuals, group of individuals, or companies other than public sector, other than public sector। मतलब क्या? गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी होगा तो भी इट विल कम अंडर द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई वेंडर होगा, which is, suppose I am supplying some goods to the government department, in that case my income will not be the public sector income, my income will be considered as private sector income। So अगर simple terms में calculate करना है,
the net national product at factor cost for private sector. For private sector, how will I do that? National income. National income मतलब क्या? NNP at factor cost. That is what you call as national income minus public sector earning. माइनस पब्लिक सेक्टर अर्निंग. अब इस कंसेप्ट से फायदा क्या होता है, इससे पता क्या चलता है? इससे हमें पता चलता है एग्जैक्टली हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो देश के जीडीपी में, देश की ग्रोथ में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर पब्लिक सेक्टर के कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर का योगदान कितना है. फॉर दैट पर्पस यू नीड टू कैलकुलेट द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फॉर ओनली private sector by excluding what? The public sector earnings. Did you understand this? Is it clear? Now, the next aspect again that we have to talk about is the personal income. Personal income. Now, if you take the example of corporate earnings, corporate earnings. What do I mean by corporate earnings? The profits earned by companies. Profits earned before taxes by incorporated bodies. Incorporated bodies. मतलब जिनका अलग अस्तित्व है इंडिविजुअल्स के छोड़ के, उनको जिन लोगों ने बनाया है उनके अस्तित्व के अलावा इन कंपनीज को अलग से महत्व है क्योंकि दे आर इनकॉर्पोरेटेड एज द सेपरेट बॉडीज, राइट? नाउ देयर प्रॉफिट्स अर्न्ड कैन बी यूटिलाइज्ड एज री इन्वेस्टमेंट. सम पार्ट ऑफ इट इज री इन्वेस्टेड. This is called as retained earnings. Retained earnings. Then the second part of that goes in the form of corporate taxes. Corporate taxes. So agar, and some part is distributed, that is dividends. राइट? अब जहां तक बात है डिविडेंड्स की, ये पैसा कंपनी ने शेयर होल्डर के बिहाफ पे कमाया और उतना कमाया हुआ पैसा शेयर होल्डर तक पहुंचाया, तो इसका मतलब शेयर होल्डर गॉट दैट मनी विदाउट हिज एफर्ट्स टू स्पेंड और नॉट. सो दैट शुड फॉर्म पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज पर्सनल इनकम. बट व्हेन इट कम्स टू द इनकम अर्न्ड बाय कंपनी बट इट इज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज इन फैक्ट फ्लोड बैक, रिटेन्ड अर्निंग्स रीइन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस. मतलब पैसा कमाया तो गया पर खर्च करने के लिए मिला ही नहीं. अब मैं कहीं काम कर रहा हूं, सपोज यहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के अगेंस्ट आपने फीस पे की, दैट फीस इज अवेलेबल टू मी टू स्पेंड और नॉट. But if I am a corporate body and some part of that profit is not been given to me but that has been used back for the business purpose, that is reinvestment of earnings. In that case, in such situation, the reinvested earnings are earned by me, that is my company on my behalf, but it is not available to me for spending. उसी तरह से कंपनी के ऊपर जो टैक्स लगाया गया वो किसके पास गया? गवर्नमेंट के पास. वो मुझ तक पहुंचा क्या? नहीं. मतलब दैट विल ऑल्सो नॉट बी अवेलेबल फॉर मी टू स्पेंड. दैट्स व्हाई these two amounts are called as earned but not received. आपकी कंपनी ने आपके बिहाफ पे ये पैसा कमाया तो सही पर आप तक पहुंचाया ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज earned but not received. Is it point right?
Similarly, there can be some government policies. Under the government policies, government schemes, there are benefits provided to individuals, primarily monetary benefits, provided to individuals without any productive service. Without any productive service. Like take for example, Manrega. Manrega is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. उसके अंतर्गत कई सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और उसके अगेंस्ट दे अर्न द मनी. So they are required to put the efforts. They are supposed to produce the services. Only after that they'll be earning the money or not. But then there are certain schemes which have been brought by the government for the senior citizens, for the Ladki Bahins, for the Lakpati Didi. What these benefits, what these schemes are, against which you are not supposed to provide any services. If you are eligible, your account will get credited with a particular amount. Government runs a scheme for the farmers called as Alp Bhudarak Samman Nidhi. Alp Bhudarak Samman Nidhi means what? That if you are having a small piece of land, that is called as Alp Bhu, very small land. If you are the owner of a small piece of land and you are doing farming on that, then in that case you will be supported by the government to the extent of rupees 2000 per quarter. अब ये 8,000 रुपए साल के जो उस अल्प भूधारक के अकाउंट में डायरेक्टली अकाउंट में पैसा आता है, ये जो अकाउंट में पैसा आ रहा है उसके लिए इज दैट भूधारक रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनी सर्विसेज टू द गवर्नमेंट? कि बाद में जब भी उस पे क्रॉप आएगी उसमें से 1/10 ऑफ द क्रॉप ही सपोज टू गिव टू द गवर्नमेंट फ्री ऑफ चार्ज? नो, नथिंग ऑफ दैट काइंड. It is the monetary benefit received without providing any productive services. So whether it is Ladki Bahin, whether it is central government's health scheme, whether it is any of the central government health scheme तो नहीं कंसिडर करेंगे यहाँ पे क्योंकि वो सपोर्ट सर्विस है, यहाँ पे पैसा नहीं आता है. बट फर्स्ट केस में पैसा आ रहा है, लाडकी बहन पैसा आ रहा है आपके अकाउंट में डायरेक्टली. तो इस तरह का पैसा जब आपके अकाउंट में आता है जिसके लिए आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, उतना आपके पास सरप्लस बच रहा है फॉर द पर्पस ऑफ स्पेंडिंग और नॉट, उतना पैसा आपके पास आ रहा है फॉर द पर्पस ऑफ स्पेंडिंग इन द सोसाइटी. So that's why that is considered as the personal income but not the national income. क्यों? From the government pockets. It is going back to the individual's pockets from whom it is recovered or not. That's why it is not the part of national income. क्योंकि national income जो थी वो तो सबका प्रोडक्शन, सबकी सर्विसेज का एग्रीगेट था या नहीं, पर उसमें से गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस के तौर पे पैसा वसूल किया उसी में से आपको ये पैसा वापस दिया जा रहा है नहीं. That's why it is the part of personal income but not the national income. So these all will be called as what? Received but not earned. That's why these are called as transfer payments. These are called as what? Transfer payments. So when I am required to calculate the personal income or PI, that will be what? National income, NI. What is national income? Net national product at factor cost. Is it right? National income add ट्रांसफर पेमेंट्स, चाहे वो सोशल सर्विस बेनिफिट्स के तौर पे आए, चाहे आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस आए, चाहे आपको लो क्वांटिटी लैंड का अलाउंस आए, किसी भी तरह से आपको वो पैसा आ रहा है, दैट ऑल विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? द ट्रांसफर पेमेंट्स. इज राइट? सो एड बैक ट्रांसफर पेमेंट्स, लेस कॉर्पोरेट टैक्सेस
minus retained earnings. Minus retained earnings. Is it point right? This all will give you what? The value of personal income. I hope I'm going good. Online. You're able to relate to what we are talking about in here. Because this class is not for the individual, this is for the group, for everyone who is connected, who is calculating or who is understanding these all things. All right. Last concept in this, that is the net disposable income. Disposable income. पर्सनल इनकम क्या है? जो मैंने पैसा कमाया, बट वो पूरा का पूरा पैसा मेरे पास खर्च करने के लिए है क्या? आंसर इज नो. क्यों? If Sitaraman madam says that you have to pay the tax to me from that income, then in that case my disposable income, my income in hand and my income disposable will get reduced or not. And that's why disposable income is equal to personal income less personal income tax. Less personal income tax. एनआईटी डिडक्ट कर लिया था हमने एनएनपी कैलकुलेट करते समय. जब हम लोग एनएनपी कैलकुलेट कर रहे थे तभी उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल लिए थे हमने. कॉर्पोरेट टैक्सेस हमने रिमूव कर लिए पर्सनल इनकम कैलकुलेट करते समय, और पर्सनल इनकम टैक्स को भी रिमूव कर दिया हमने डिस्पोजेबल इनकम को कैलकुलेट करते समय. मतलब ये वो पैसा है जो अल्टीमेटली हमारे देश का व्यापारी, हमारे देश का इंडिविजुअल अपने आप पर या कंजम्पशन पर या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकता है. एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द नेट डिस्पोजेबल इनकम. इज इट पॉइंट राइट? यही इफ आई वांट टू कैलकुलेट द एनएनडीआई, व्हाट इज एनएनडीआई? नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. व्हाट डू वी डू? अच्छा, यहां पे एक कंसेप्ट और समझा दूंगा मैं. सॉरी, वेट, जस्ट वेट फॉर इट. एनएनडीआई कैलकुलेट करने के लिए वापस ये हमारा इंडिया, ये आउटसाइड इंडिया, राइट? देयर इज अ पर्सन हु इज स्टेइंग आउटसाइड इंडिया. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या बाहर का है, दैट्स इररिलेवेंट. ये बाहर रहता है, हमारे देश में नहीं रहता है, पर इसके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं. His parents are staying in India. Parents. This is I par, this is I. Right? Now this person is earning outside India. He is staying outside India. He is not an Indian citizen, Indian resident. He is earning outside India. Out of this earning, he is sending part to his parents in India. रह कहां रहा है? देश के बाहर. कमा कहां रहा है? देश के बाहर. This is not NFI. Please understand, there is a difference between NFI and the transfer payment from abroad. NFI का मतलब क्या था? नेट फैक्टर इनकम्स. मतलब हम लोग बाहर वालों के लिए काम कर रहे हैं या बाहर वाले हमारे यहां काम कर रहे हैं, उनका नेट वैल्यू इज एनएफआई. पर यहां हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हमारे लोग या कोई भी व्यक्ति देश के बाहर रह रहा है, वहां पे पैसा कमा रहा है और वहां से वो पैसे को हमारे देश में भेज रहा है, जो वापस नहीं जाएगा, जो पैसा वापस नहीं जाएगा. दैट इज व्हाट वी कॉल एज द ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड. Transfer payment from abroad. Is it right?
उसी तरह से अगर बाहर का कोई व्यक्ति इंडिविजुअल काम कर रहा है इंडिया में, सपोज कोई चाइनीज बंदा है, वो यहां पे आके सेटल हो गया, अब यहां आके सेटल हुआ तो यहां पे पैसा कमा रहा है, इज अर्निंग इन इंडिया, and the part of his earning he is sending to outside India. This is transfer payment to abroad. Are you able to understand this? यहां पे पैसा कमाया, यहां पे टैक्स भी भर दिया, पर जो बचा हुआ पैसा था उसमें से कुछ पैसा उसने बाहर भेज दिया. That is called as transfer payment abroad. So when I am calculating NNDI, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, बाहर से जो पैसा आ रहा है हमारे देश में डिस्पोजेबल के लिए बढ़ रहा है या नहीं, और हमारे देश से जो बाहर जा रहा है वो हमारे देश का डिस्पोजेबल इनकम कम हो रहा है या नहीं. सो फॉर दैट पर्पस विल कैलकुलेट इट एज व्हाट, डीआई, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम, प्लस और माइनस ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड. Why plus or minus? There are the money coming in, there are the flows going out. That's why plus oblique minus the transfer payments from abroad. Did you people get it? ये हो गई आपकी सारी की सारी concepts related to national income. लगभग 18 पन्ने छपे हुए हैं आपके ICI मॉड्यूल में. And those 18 pages we have covered in these 3 or 4 pages. Right? And I hope the conceptual understanding is going good for everyone, and no one is having any kind of questions, doubts or difficulties in this. If at all, question किस तरह के आ सकते हैं, मैंने उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है. आई एम नॉट फोकसिंग ओनली ऑन कि कंसेप्ट क्या है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है. ऑफ कोर्स वो तो समझना ही है हमको, बट साथ ही साथ एग्जाम में हमारे सामने जब क्वेश्चन आएगा तो उसको हमने कैसे डील करना है. आई होप यू पीपल आर गेटिंग दैट पॉइंट ऑल्सो. राइट, लेट मी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज the methods of computation. Methods of computation of national income. That is value added method, income method, or the expenditure method. अच्छा, सवाल यह बनता है कि सर इतनी सारी मेथड्स की जरूरत क्या है, एक ही मेथड से क्यों नहीं कैलकुलेशन करते. टेक्निकली देखा जाए तो चाहे आप इनकम मेथड की बात करें, वैल्यू एडेड मेथड की बात करें, एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें, तीनों मेथड से अल्टीमेटली आपका नेशनल इनकम सेम आना चाहिए. ये लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, सॉरी टेक्निकल है. बट हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमको डेटा सही नहीं मिलता है हर चीज का, हर जगह से. एंड दैट्स द रीजन वी हैव द मिक्स ऑफ द मेथड्स टू बी फॉलोड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. मैं इन तीनों मेथड्स का आपको बेसिक बता देता हूं, फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंक्लूडेड, व्हाट इज एक्सक्लूडेड, और विल फिनिश द थ्योरेटिकल पार्ट जो 3 हिस्से हैं, दैट इज सिग्निफिकेंस, लिमिटेशंस एंड जीडीपी विद वेलफेयर. ये 3 चीजें डिस्कस करके इस वाली यूनिट को खत्म करके कल कीनेसियन मॉडल भी हमारा खत्म हो जाएगा. ऑलराइट, तो अब सवाल बनता है कि ये जो 3 मेथड्स हैं ये क्या हैं. वैल्यू एडेड मेथड कहता है कि जो जितना वैल्यू एडिशन कर रहा है सिर्फ उतने को ऐड करो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम. जैसे एक फार्मर ने कपास ग्रो की, उसने सीड में कपास ये वैल्यू ऐड किया नहीं. नाउ व्हाट इज सेलिंग इन द मार्केट इज कॉटन. कॉटन बेचने पे मान लो उसको 10 लाख रुपए मिले, पर वो 10 लाख के अगेंस्ट ही हैज परचेज्ड सीड्स, ही हैज परचेज्ड इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स. सो फॉर दैट पर्पस फ्रॉम दैट 10 लाख सब्ट्रैक्ट दिस इंटरमीडिएट गुड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, सीड्स, इनको सब हम रिमूव करेंगे. मान लो ये 2 लाख रुपए की वैल्यू के थे, तो 2 लाख की वैल्यू में फार्मर ने कितनी वैल्यू ऐड की टू कन्वर्ट इट टू 10 लाख? 8 लाख. सो दैट 8 लाख विल बी कॉल्ड एज द वैल्यू एडिशन. अब ये 10 लाख का कॉटन ये चला गया मान लो किसी फैक्ट्री में टू कन्वर्ट इट इनटू द थ्रेड.
या कोई वीविंग फैक्ट्री में, कोई जिनिंग फैक्ट्री में चला गया। जिनिंग एंड वीविंग फैक्ट्री का काम क्या होता है? दे रिमूव द कॉटन सीड्स आउट ऑफ दैट। हर कॉटन का जो फ्लावर होता है उसके अंदर एक बीज होता है छोटा सा। दे रिमूव द कॉटन सीड्स आउट ऑफ दैट एंड देन दे कन्वर्ट इट इनटू अ बेल। उसको कंप्रेस करते हैं पूरी तरह से और उसका बेल बनाते हैं, उसको पैक करते हैं। तो जब कॉटन सीड्स निकाल के जिन करके उसको वीव किया गया, वीविंग इज एक्सट्रैक्टिंग ऑफ दैट सीड्स एंड जिनिंग इज पैकिंग दैट इन बंडल्स। तो ये जब जिनिंग एंड वीविंग की गई, मान लो उसने 10 लाख के कॉटन की वैल्यू बना ली 15 लाख रुपए, तो उसने जो जिनिंग और वीविंग की प्रोसेस की उसकी वजह से कितना वैल्यू ऐड किया? 5 लाख रुपए। तो हमारे जीडीपी, हमारे नेशनल इनकम में कितना इंक्लूड होना चाहिए? 5 लाख। फार्मर का कितना ऐड होगा? 8 लाख। जिनिंग और वीवर का कितना इंक्लूड होगा? 5 लाख। देन ये गया किसी पर्टिकुलर कंपनी में, वहां पे इसका थ्रेड बनाया जा रहा है। उन्होंने कॉटन बेल से थ्रेड में उसको कन्वर्ट किया। तो द थ्रेड कन्वर्जन में वो 15 लाख की वैल्यू हो गई मान लो 18 लाख रुपए। 3 लाख रुपए और ऐड हो गए। वैल्यू एडिशन इज ऑफ हाउ मच? 3 लाख। हाउ आर यू अराइविंग एट दिस वैल्यू एडिशन? सेल्स माइनस द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स और नॉट। तो डिफरेंस इज व्हाट यू कॉल एज वैल्यू एडिशन। So that's the simplest crux of that. Value added method में how do you calculate the national income? Sales minus intermediate goods will give you the value addition, and the aggregate of value addition of all will give us the national income. Did you understand this? Is the first part clear? Second, income method. Income method मतलब क्या? Factors, salary कमा रहे, interest कमा रहे, rent कमा रहे, प्रॉफिट कमा रहे, इन सबको जब तुम टोल जोड़ लोगे, इन सबको जोड़ लोगे तो वो क्या बनेगा? नेशनल इनकम। सबकी इनकम पहले क्या ऐड कर रहे थे हम लोग? वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन वाज इंक्लूडिंग व्हाट? अब सपोज 10 लाख रुपए के कॉटन को जिनिंग एंड वीविंग मिल में 15 लाख में बेचा, पर वो 10 लाख के माल को 15 लाख में कन्वर्ट करने के लिए दे हैड टू पुट द लेबर इन दैट और नॉट? उन लेबर्स को सैलरी दी थी, दे हैड टू पुट द फैक्ट्री फॉर दैट, उस फैक्ट्री के लिए उन्होंने रेंट पे किया था, दे हैड टू पुट द इलेक्ट्रिसिटी फॉर दैट, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को पेमेंट किया था। तो दिस ऑल वाज कंसीडर्ड एज वैल्यू एडिशन। नाउ वी आर कंसीडरिंग द इनकम्स ऑफ दोज रिस्पेक्टिव पीपल। किसने कितना कमाया? फार्मर ने 8 लाख रुपए कमाए, 8 लाख रुपए। सैलरी एम्प्लॉइज ने अगर 3 लाख रुपए कमाए, 3 लाख रुपए। वो वीवर जो है, जिनिंग फैक्ट्री वाला जो है, उसने 1 लाख रुपए कमाया, 1 लाख रुपए। इसीलिए मैंने कहा अल्टीमेटली कोई सी भी मेथड ले लो, टेक्निकली आंसर सेम आना चाहिए। पर हमारे देश में आंसर सेम क्यों नहीं आता है? डेटा नहीं है अवेलेबल। दैट्स द मेजर रीजन। सो व्हेन यू आर एग्रीगेटिंग द इनकम्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स, द एग्रीगेट द टोटल ऑफ ऑल दीज इनकम्स इज व्हाट यू कॉल एज द नेशनल इनकम। फिर तीसरा सेगमेंट एक्सपेंडिचर मेथड की जरूरत क्या है? फिर एक का इनकम, दूसरे का खर्च है, तो आपको खर्चे की मेथड की जरूरत ही नहीं है। हालांकि जरूरत है। क्यों? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ये जो है ये पैसा कमाते नहीं है, ये सिर्फ पैसा खर्च करते हैं। जैसे डिफेंस में, डिफेंस के ऊपर खर्च हुआ, आर दे अर्निंग? हाउ विल यू कैलकुलेट द इनकम मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड फॉर देम? तो गवर्नमेंट ने डिफेंस पे कितना खर्च किया, दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेशनल इनकम ओनली और नॉट? एंड दैट्स व्हाई देयर विल बी यूजिंग व्हाट? एक्सपेंडिचर मेथड। Expenditure can be of government, expenditure can be of private. Expenditure can be for consumption, expenditure can be for capital formation. So expenditure for final consumption, expenditure for capital formation put together becomes the part of national income. तो ये सारी चीजें किस तरह से इसको फैक्टर इन करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या इंक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड होगा for the purpose of calculating the national income. In tomorrow's lecture, we'll finish with the theory part. First 15-20 minutes will be on these parts. और उसके बाद हम लोग केनीजियन मॉडल को भी खत्म करके कल चैप्टर 6 को हम लोग खत्म कर देंगे। I hope my speed is going good for everyone. It's not too fast, it's not too slow. Of course, slow तो नहीं है, मुझे पता है, but it is not too fast for everyone. Right? Okay. We'll be meeting tomorrow. Next lecture will be law, and after that will be accounts. Okay. And maths will be there today.